جی سر میں فیڈرل گورنمنٹ میں. آپ معاونت کرنا پسند فرمائیں گے؟ جی آپ نے آرڈر پڑھ لیے جو ہم نے آپ کو بھیجے تھے؟ جی سر پڑھے ہیں. اچھا یہ آپ نے ہمیں کچھ فائل کیا ہے؟ جی سر ہم نے رپورٹ جو اپنی جو آپ دونوں جوائنٹ کیے؟ جی جی جوائنٹ رپورٹ. اچھا چلیں ویری گڈ. یہ اچھا who wants to read it? But we don't have a copy. It was filed in court. نہیں اوکے اور مزید کاپیز بھی کروا لیں. آپ کیسے ہیں؟ آپ کیسے؟ یہ رپورٹ یہ کہاں سے ہم پڑھیں؟ ریلیونٹ چیزیں کیا بتائیں؟ سر آپ کو زبانی بتا دیں بغیر پڑھے؟ زبانی بتا دیں تو اور اچھا ہے. جی اس کا اس طرح ہے کہ انہوں نے سی ڈی اے نے کوئی پروسیجر جو کرنا ہوتا ہے اس کا ایس او پی بنایا ہوا ہے. انہوں نے اپنے ایس او پی کو فالو نہیں کیا اور جو بیسٹ اسٹینڈرڈ پریکٹسز ہیں ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹس آف پنجاب اینڈ کے پی ان کو بھی فالو نہیں کیا. بیسٹ واٹ؟ جو اسٹینڈرڈ پریکٹسز ہیں کیونکہ فارسٹری ڈپارٹمنٹ انگریز دور سے آ رہا ہے, کالونیل دور سے آ رہا ہے, بہت پرفیکٹ سسٹمز ہیں اس کے. وہ یہاں پر البتہ ایک چیز کریں, ایس او پی میں کیا لکھا ہے جو کہ انہوں نے فالو نہیں کیا ہے؟ مثلا ڈیپو نہیں بنایا. کیا؟ جو لکڑی کٹی تھی اس کا ڈیپو بنانا تھا. اچھا وہ نہیں بنایا. مطلب ڈیپو جہاں لکڑی سٹور کرتے ہیں؟ جی جی لکڑی کاٹ کے سٹور کرتے ہیں, کوئی بندہ اس کی پیمائش کرتا ہے پھر وہ ٹھیکیدار کو دیتا ہے سولڈ مٹیریل. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے ڈیپو ہمیں نہیں نظر آیا, نہیں بنایا. ٹھیک ہے. آپ سی ڈی اے کے وکیل کون ہیں؟ نوٹ کرتے جائیں پوائنٹس. ٹھیک ہے. اچھا ہاں. دوسرا انہوں نے جو والیوم ٹیبل استعمال کیا ہے جس سے انہوں نے پورے لاٹ کا والیوم نکالا ہے اس کی ہمیں کوئی ویراسٹی کا نہیں پتا, کس نے بنایا, کس نے کیسے بنایا. والیوم ٹیبل کیا ہوتی ہے؟ ایک آپ نے درخت کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کا والیوم ان کیوبک فٹ کتنا ہے؟ یہ کوئی سسٹم ہوگا نا؟ جی سسٹم ہے. اس میں آپ نے صرف اس کا ڈائیمیٹر لینا ہوتا ہے ایٹ بریسٹ ہائٹ, اور جو ڈائیمیٹر ہے پھر آپ نے والیوم ٹیبل ایک بنا ہوا ہوتا ہے اس میں دیا ہوتا ہے اس کے اندر اتنے کیوبک فٹ لکڑی ہے. اور والیوم ٹیبل ایسے بنتا ہے کہ ایکچوئل سیمپل کٹائی ہوتی ہے اور وہ کٹائی کر کے پھر پیمائش ہوتی ہے کہ یہ درخت کا انچ اتنے انچ گرد تھا اور اس میں سے اتنی لکڑی ٹمبر نکلی, اتنی فائر وڈ نکلی, اینڈ somebody gives a certificate, and that person who is جو مینول میں ہے, that person who gives that certificate will never be involved in the entire auction or sale process. تھرڈ پارٹی کا ہوگا. یہ اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے پروونسز کی, ان کے پاس ایسی کوئی پریکٹس نہیں ہے. ان کا آپ نے کہا ایس او پی نہیں فالو کیا. ان کے ایس او پی میں ایک تو ڈیپو ہے, ڈیپو ہے. اس بات کا ذکر ہی نہیں ہے کہ والیوم ٹیبل ہو, اور والیوم ٹیبل جو انہوں نے استعمال کیا ہے وہ ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں کس نے بنایا ہے. اوکے ٹھیک. ایک تو یہ ڈیفیکٹ ہے. ٹھیک ہے. تیسرا یہ جو آپ سائٹ پہ گئے یا نہیں گئے؟ جی 4-5 دفعہ گئے ہوں. اچھا ان کا کہنا یہ سارے ملبری کے درخت تھے, وہ اب پر کٹ گئے تو کچھ نہیں کہہ سکتے, مگر جو ہم نے کمشنر جو اپوائنٹ کیے ہیں ان کا کہنا یہ کہ اس میں اور بھی درخت تھے تو انہوں نے سبھی کچھ کاٹ دیے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ جی میں نے انڈیپینڈنٹلی جتنی بار بھی گیا ہوں اور کچھ لوگوں کو ساتھ بھی لے کے گیا ہوں, مجھے ایک تو پہلے آپ 100% سرٹینٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ تھے اور کٹ گئے, کیونکہ انہوں نے لسٹ جو بنائی ہے درختوں کی وہ صرف کٹنے والے درختوں کی بنائی ہے, جن کو ریٹین کرنا تھا اس کی لسٹ نہیں بنی. نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ سارے ہی پیپر ملبری تھے؟ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی بھی نہیں, مگر اگر آپ دیکھیں نا جیسے یہ زمین کا ٹکڑا ہے, انہوں نے ابھی یہ اتنا کاٹ دیا یہ حصہ, ٹھیک ہے, ابھی یہ حصہ باقی ہے. جی تو آپ اس حصے کو دیکھ کر کے آپ اندازہ یہی لگائیں گے کہ جو یہاں تھا وہ یہاں بھی تھا. جی تو بالکل. اگر یہ 100% پیپر ملبری ہے تو پھر تو ان کی بات صحیح ہے, تو یہ بھی 100% ہوگا, اندازہ لگا سکتے ہیں نا. اگر یہ آپ سمجھتے ہیں اس میں 50% پیپر ملبری ہے تو پھر یہ بھی یہاں بھی 50% ہوگا. آپ کے اندازے کے مطابق میرے اندازے کے مطابق اس میں انہوں نے کوئی ہیرا پھیری نہیں کی ہے, کوئی ایکسٹرا درخت نہیں کاٹے ہیں. میں صرف
अपने तजर्बे की बेस पे कह सकता हूँ। अगर आप पूछेंगे कि कैसे असर्टन किया, ये तजुर्बा इसीलिए तो जी, आपको तजुर्बे एक्सपर्ट की के लिए बेस पे अपॉइंट कह रहा किया ना हूँ, हमें। क्योंकि जहां पर भी मैं गया हूँ, मुझे जहां पर पॉसिबल था छोटा दरख्त शीशम का, वो खड़ा हुआ मौजूद है अभी भी, और बहुत कुछ कम। हमने तस्वीरें फाइल की, वो बिल्कुल ग्रीन ब्राउन फील्ड नजर आ जी, रही है। वो जो ब्राउन फील्ड नजर आ रहा है, वो तस्वीरें हमने, जिन्होंने तस्वीरें फाइल की, वो साहब हमारे साथ गए थे। हाँ। वो जिसको समझ रहे हैं कि ये ट्रक में शीशम की लकड़ी जा रही है, वो शीशम की नहीं है, वो पेपर मलबरी की है। अच्छा, ठीक 100% पेपर मलबरी की। एक लॉग भी हमें नजर नहीं आया शीशम का या किसी और स्पीशीज का। ठीक है। नहीं तो उन्हें रिमूव तो नहीं कर लिया, अलग कर दी, छांटी कर ली, ऐसा आप? ये अब हम नहीं, मैं सिर्फ देख रहे हैं वो, देखें एक एरिया के होता है ना, एक जंगल है, तो जंगल में वही किस्म की चीजें होंगी ना। जी जी ये हम जानना चाह रहे हैं कि जंगल का जो ने कटाई की हिस्से की, और जो बाकी, वो तो आप नहीं पता है आपको क्या कटाई की जी। आप, मगर बाकी तो देख सकते हैं ना। आप कहेंगे ना इसमें तो यार कई और भी दरख्त थे, आपने तो ये 90% थे या 10% थे, लेस देन 1% टू 1 to 2% भी नहीं। तो इन्हें सही किया फिर? इन्होंने सही की। ओके, सही है। तो एक उन्होंने गलती की ये। अच्छा, दूसरी बात, हमें ये हमने जो, खैर हम एक्सपर्ट तो नहीं है, मगर हमें जो समझ आई कि जो आदमी कटाई करे उसको अलग ठेका देना चाहिए, और जो आदमी लकड़ी जिसको बेच रहे हैं उसका एक अलग ठेका होना जी चाहिए। बिल्कुल, ये ऐसा ही है। क्योंकि वो कटाई वाला कहेगा नहीं नहीं ये पेपर मलबरी नहीं है, तो काटने वाला वो सब चीज काटना चाहेगा कि मैं सब कुछ काट लेता हूँ, ज्यादा लकड़ी मिल जाएगी। जी, जमाने कदीम में स्टैंडिंग ट्रीज की ऑक्शन होती थी। से मरी में आपको जैसे गोदाम है, जाओ 500 दरख्त ले लो और यहाँ से ऑक्शन कर दी, और वो 500 की बजाय 5000 ले जाता था। 72 या 73 में सीसीआई ने, बहुत समझदार लोग थे जिन्होंने ये फैसला कराया था, सीसीआई क्या है? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अच्छा, ओके। उसमें फैसला हुआ था कि कोई भी जो है स्टैंडिंग सेल नहीं होगी। एक इदारा बनाएगा जो कटाई करके डिपो में लाएगा, और दूसरा तीसरा इदारा उसको बेचेगा। तो वो सिस्टम अभी तक प्रोविंसेस में ऐसे ही चल रहा है, और इधर भी यही करना चाहिए था। इसमें हमारी रिकमेंडेशन ये है कि इनका जो वॉल्यूम टेबल है, ये खुद ही असेस उसको करें, ये खुद ही उसको वेरीफाई करें, लेकिन वेरीफाई वो करेगा जो ऑक्शन नहीं करेगा। मतलब कोई और आदमी आ जाए जी, सीनियर से। आप डायरेक्शन दे सकते हैं प्रोविंसेस। साथ ही पिंडी में डीएफओस 4 बैठे हुए, फॉरेस्ट सर्विसेज एकेडमी गोरा गली में बेहतरीन ऑफिसर्स बैठे हुए। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ये इनको काम खुद करना चाहिए या ठेके पे देना चाहिए? प्रोविंसेस सारे ठेके पे देते हैं। नहीं, अच्छी चीज क्या है? ठीक है, ये कहते हैं हमारे पास कोई ये Separate एक तरह काटने की एबिलिटी नहीं है। सेपरेट ठेके देने चाहिए। नहीं, इनके लोग खुद क्यों ना काटें? अगर काट सकते हैं तो काटें। नहीं, तो क्या मतलब? जो स्किल्स होती हैं इसकी, भाई इनके पास गार्डनर्स है ना, ठेकेदार भी तो ठेकेदार होता है ना। देखिए ये वो स्किल सेट डेवलप नहीं करना चाहिए इनको? स्किल्स डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि मार्केट पे डिपेंड करता है। मार्केट जो ठेकेदार है वो पहले परचेजर के पास जाएगा, फैक्ट्रीज के पास जाएगा, उनकी साइजेस लेगा, उसके मुताबिक काटेगा। ये ऊट पटांग काट देंगे, कुछ जो 4 पैसे आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। गलत हो जाएगा। ओके, ठीक है। और कंटिन्यू इसमें- करें, सॉरी मैं आप और बताइए, कुछ और बताना है आपको? इसमें जो बाज़ाहिर लगता है कि इन्होंने बहुत कम रेट लिया है, 66 रुपीस पर स्क्वायर क्यूबिक फीट। इसमें चूंकि रिमूवल ऑफ स्टम्प्स है, जो जड़ है, काटने के बाद जो जड़ है, वो लेबर भी शामिल है, और वो बहुत महंगा काम होता है। नहीं, इन्होंने जड़ें निकाली हैं? कुछ निकाली थी, आपके ऑर्डर के बाद इन्होंने रोक दी, वो उधर ही पड़ी है। ठीक, तो अच्छा, अब आप क्या मशवरा देंगे, आगे कैसे हम चलें इस केस में? एक तो इनको चाहिए कि अपने एसओपी को रिवाइज करें। नहीं, मैं अभी देखिए, ये पेपर मलबी तो खराब चीज है ना। जी जी इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी जी, इसमें दो राय नहीं है। 2 राय नहीं है, लेकिन एक राय और है। इसमें एक लिखा हुआ है कि ये एक आसमान से गिरा खजूर में अटका वाला काम कर रहे हैं। पेपर मलबरी एक एलियन इन्वेजिव स्पीशीज है, दूसरी एलियन इन्वेजिव स्पीशीज को उधर प्रमोट कर रहे हैं, उनको बचा के खड़ा किया हुआ है, क्योंकि उनकी इन्होंने लिस्ट नहीं बनाई थी। वो कौन सी एलियन? इपल एक उधर है। हाँ, इपल ये क्या चीज है? ये एक नॉर्मल नाम बताएं जो है। इसका इपल कहते हैं पंजाबी में, इपल। ये पूरे पाकिस्तान में इपल, IPIL। नहीं, ये क्या चीज है? ये दरख्त है। नहीं, अंग्रेजी का क्या नाम है? अंग्रेजी भी इसका नाम IPIL।
نہیں یہ انگریزی کا الفاظ ہے یا اردو کا ہے؟ یہ انٹروڈیوسڈ ہے, فورن ہے, ایلین ہے, انویزو ہے, جس نام سے باہر سے آیا تھا. ہم ابھی اس پاکستان میں اردو, پنجابی, پشتو سب میں اس کو ایپل ہی بولتے ہیں. اچھا, یہ لگا رہے ہیں یا یہ بھی ہیں؟ یہ بچا رہے ہیں اس کو. یہ بچانے سے کیا مراد؟ جو انہوں نے آکشن کیے نا, دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں نا, بہت ساری اسپیسیز ہیں جو انڈیجنس اسپیسیز نہیں ہیں, ٹھیک ہے, مگر وہ انٹروڈیوس ہو گئی, مگر اس کا کوئی منفی نتائج نہیں نکلتے ہیں. ہم صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ متفق ہیں, آپ دونوں ایکسپرٹس کے یہ پیپر ملبری کے منفی نتائج ہیں؟ ہم فارسٹر ہیں. ہم نے آنے سے پہلے جو پاکستان کے ٹاپ کے ٹیکسانومسٹ سب سے ری ویریفائی کر لیا آپ کے پاس. یہ تو بات طے ہو گئی. اب ایپل جو ہے مے بی انویسو اسپیسیز, مگر اس میں کوئی منفی وہ بھی ہے علامت, بہت شدید منفی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ کسی بھی اسلام آباد کے ٹریل میں چلے جائیں تو جو نئے پودے آ رہے ہیں وہ سارے 100% ایپل کے آ رہے ہیں. وہ ساری اسپیس آکوپائی کر رہے ہیں. جو نیٹو ٹریز ہیں آئندہ 5-10 سال میں وہ تباہ ہو جائیں گے. ان کو تو نہیں, یہ ایپل, اچھا ایپل کا کیا ہے؟ یہ اسپیس لے لیتا ہے, یہ کانٹا پھل لگتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ کانٹا چھٹا نہیں ہے. جب افغان وار ہو رہی تھی, میں ینگ فارسٹ افسر تھا, امریکن ایکسپرٹس آ کے انہوں نے ہمیں سے زبردستی لگوایا تھا. ہمیں پتہ, ہم سمجھتے تھے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور وہ ان کو بھی شاید نہیں پتا تھا. اور دنیا میں جو بھی ایلین سپیشیز انویسو ہوئی ہے وہ ایکسیڈنٹلی ہوئی ہے, تو یہ بھی ایکسیڈنٹلی ہو گیا. اور نہیں, یہ آج بھی لگا رہے ہیں یہ چیز؟ آج بھی یہ ان کو پتا ہوگا کہ ان کی نرسری میں ہے یا نہیں ہے. ہم نے نرسری نہیں دیکھی, لیکن یہ بچا رہے ہیں اس کو. اگر یہ کتنے تناور درخت کھڑے ہوئے ہیں تو یہ بن جاتا ہے تناور درخت. یہ بچانے سے مراد کیا؟ بڑے بڑے درخت جو انہوں نے آکشن کیا پیپر ملبری کا, اس میں جو ایپل کے درخت بچے تھے ان کو بچا لیا. قیمتی لگا رہنے دیا, ان کو نہیں کاٹنے دیا. آپ کے خیال میں ان کو بھی کاٹنا چاہیے؟ ان کو تو پہلے وہ ایک عذاب کی بجائے وہ ڈبل عذاب ہے. اچھا, آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں جی 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 سر, یہ ایکسپرٹ ہیں اور میرے سینئر بھی ہیں. کوئی بات سے اتفاق نہ کریں, آپ ہماری دونوں معاونت کے لیے برا نہیں مانیں گے کیونکہ ایکسپرٹس کبھی کبھی جی سر, ایپل میں اتنا اتفاق کرتا ہوں کہ اتنا انویسو جس طرح پیپر ملبری ہے, جس طرح اس کے ہارمفل امپیکٹس ہیں, اس طرح سے اس کے نہیں ہیں. لیکن اگین یہ انویسو اسپیشیز. اور کیا آپ نے بات بتانا چاہتے ہیں ہمیں؟ اور سر اس میں جو درخت انہوں نے لسٹ بنانے کا مقصد کیا تھا, اگر ادھر نمبر نہیں لگے ہوئے, ابھی بھی نمبر نہیں نظر آ رہے. ان سے پوچھا تھا تو یہ کہتے ہیں کہ سال پہلے نمبر لگے تھے, مارکر سے مٹ گئے ہوں گے. لسٹ لگتی ہے, انیومریشن ہوتی ہے تو کمپلیٹ انیومریشن ہوتی ہے جس میں تمام درخت جو موجود ہیں, تاکہ اس سے پتہ چلے کہ جی پلانٹیشن کی بات کر رہے ہیں. نہیں, جو لسٹ ادھر لگی ہوئی ہے, جو انہوں نے درخت آکشن کیے ان کی مارکنگ لسٹ بنائی ہے, اس کی پیمائش لے کے لسٹ بنائی ہے, ادھر ایگزیبٹ میں لگی ہوئی ہے. اچھا, تو اب وہ جو آکشن کیا ہے اس پہ نمبر لگائے, نمبر سیریل نمبر ہیں ٹریز کے. اب میں اگر جاتا ہوں چیک کرنے تو مجھے کیا پتا کون سا, کوئی سیریل نمبر ہے ہی نہیں. نہیں, وہ تو دیکھیں وہ اس کا سارا دار و مدار ہوگا کتنی آمدن آ رہی ہے. نہیں, ایسا نہیں. اسٹینڈرڈ پریکٹس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا, وہ شاید ان کو 10 لاکھ روپے مل جاتے, آپ شاید 8 لاکھ مل گئے. اس کا فائدہ ہوا یہ اپنی نالائکی سے اسکینڈل میں پھنس کے, اگر وہ پورا پروسیجر فالو کرتے ان کو کچھ بھی نہ ہوتا. ابھی یہ ولنریبل ہے کیونکہ انہوں نے ایک مارکنگ لسٹ بنائی درختوں کی, اور انہوں نے چھوٹے درختوں کی بھی لسٹ بنا لی جن کا نہیں بنانی چاہیے تھی, وہ بھی بنا لی ڈر کے مارے, اور اب یہ پھنس گئے. وہ اب جو اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے, ہمیں ان کو پھنسانا ہمارا غرض نہیں ہے. ہم کیونکہ ہم یہ پبلک انٹرسٹ میٹر لیا ہوا ہے, ہمیں لوگوں کی صحت اور درخت کی اپنی بھی حقوق ہوتے ہیں. شاید آپ اگری کریں؟ جی اگری, بالکل ٹھیک کرتے ہیں آپ یا نہیں؟ بالکل بالکل, اس کے زیادہ ہے. اچھا, تو وہ بھی اب آپ جو بات پہلے ہزاروں سال پہلے ہو چکی ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کلائمیٹ چینج, گرین ہاؤس گیسز, کلیئرنگ پارٹیکولٹ میٹر فرام دی ایئر, اب یہ ساری چیزیں سائنس بتا رہی ہے جو پہلے دین بتا چکا ہے. تو خیر وہ دین میں سائنس تو نہیں اس طرح سے دکھائی جاتی. تو اب تو یہ ساری اچھی چیزیں ہیں نا. ڈیفارسٹیشن کا ریٹ پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہا ہے,
अब आप जो इन्होंने जो प्लांटेशन की है वो कौन से दरख्तों की है? ज्यादातर एग्जॉटिक हैं, इम्पोर्टेड हैं, नॉन लोकल है। आप ये सही कर रहे हैं या नहीं? मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा, शायद ये करें। मैं भी इत्तेफाक करता हूँ सर, नेटिव स्पीशीज को प्रमोट करना कौन चाहिए। सा स्पीशीज लगाना चाहिए? एक सर दरख्त है इधर मार्गला हिल्स में, जो उसको कहते हैं खैर, लोकल जबान में खैर, साइंटिफिक नाम है वो जिसकी वो भुजिया बनाते हैं? नहीं नहीं, अकेशिया कैटेचू, इसकी फलियां होती है। जब हम यंग अफसर थे तो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो हमें लेटर लिखता था, इतने मिलियन टन किलो हमें दे दो, एक्सपोर्ट ऑर्डर, इससे कत्था बनता है। इधर दरख्त उसके लगे हुए हैं मार्गला हिल्स में बहुत कम, इनकी किसी नर्सरी में उसका दरख्त ये लगाना पसंद ही नहीं करते, अच्छा, क्योंकि वो सस्ता होता है, लोकल है, देसी है। देसी इज ऑलवेज बैड। फिर इधर का नेटिव ट्री है आंवला, इंतहाई कीमती मेडिसिनल प्लांट है, इनकी नर्सरी में नहीं मिलेगा। मल्तास। ये दूसरा जो होता है, क्या इसका नाम है? शीशम नहीं लगाना चाहिए। शीशम भी लगाना चाहिए, शीशम भी फुट हिल्स का नेटिव ट्री है। और ये पाइन? पाइन इन्होंने सिटी में, वो ये पहाड़ के ऊपर से शुरू होता है जहां पर मोनाल है, उसके नजदीक से शुरू होता है नेचर में। ये जबरदस्ती नीचे लगाओगे, इट मींस कि आप क्लाइमेट के अगेंस्ट चलोगे, उसको ट्रैक्टर से पानी लेके आओगे, ट्रैक्टर में पेट्रोल जलेगा, उसकी कार्बन जाएगी, उसका नुकसान ज्यादा है। और मैं अग्री नहीं करता, शायद ये करेगी। चनार ठीक है, चनार ठीक है। ये सबसे अच्छा दरख्त इधर का लोकल जो है वो है ये क्या कहते हैं वो जिसकी फलियां बनती, कचनार। दो किस्म का कचनार है, एक पर्पल है, एक वाइट है। बेहतरीन गरीब लड़के जो है उसकी फलियों से 5 किलो बेच के एक दिन की रोजी निकाल लेते हैं सीजन में। ये उसको नहीं लगाते, वो लोकल है, नेटिव है, उस पर खर्चा भी नहीं है, पानी भी बहुत कम देना पड़ेगा क्योंकि वो अडेप्टेड है। नीम नहीं होगा, मुश्किल से होगा, बकायन हो जाएगा। कराची वगैरह में वो यहाँ पर फ्रॉस्ट पड़ती है, नीम फ्रॉस्ट को ज्यादा वैसे वो इंडिजिनस है इंडिजिनस ऑफ द कंट्री, इट्स अ वेरी रिलेटिव टर्म। व्हाट डू यू मीन? देखिए, इंडिजिनस टू पिंडी और इंडिजिनस टू पाकिस्तान। आई सी व्हाट यू मीन, but it is indigenous to Pakistan, certain areas of Pakistan, not to Pindi, गर्म इलाकों में, जहाँ कोरा बिना और गर्म इलाके हैं। अच्छा, ठीक है। और कुछ बताना चाहते हैं आप? बस इसमें बाकी हमने सर अपनी रिपोर्ट में कुछ मेंशन कर दी हैं सारी चीजें जी। वे फॉरवर्ड हमने मेंशन कर दिया है इसके अंदर। क्या चीज? रिपोर्ट के अंदर हमने के आगे हम रिपोर्ट आपकी देखेंगे, मगर कुछ चीज आप हमें ज़बानी समझाना चाहते हैं? बस ये मेन चीजें आपको बता दी। मेनली सर इनको ये कंप्लीट इन्यूमरेशन लिस्ट बननी चाहिए और डिपो होना चाहिए, वहाँ पे सुपरविजन हो प्रॉपर, जो नॉन नेटिव जो स्पीशीज नेटिव हैं उनकी मार्किंग होनी चाहिए और क्लियर वहाँ पे विजिबली मतलब उसको मार्क करना चाहिए, वो चूना या कोई इस तरह की चीज लगा लें ताकि वो कट ना सके, क्योंकि मतलब अगर वो अनसुपरवाइज छोड़ेंगे और कॉन्ट्रैक्टर के हवाले करेंगे तो वो उसको देयर इज लाइक्लीहुड के वो कट हो सकता है। मतलब जब आप कह रहे हैं ना कि वो 100% मलबरी है, 100% तो नहीं है ना सर, 99 कुछ तो हैं स्कैटर्ड ट्रीज हैं जो नेटिव हैं, तो उनको अगर बचाना है तो उसके लिए यही तरीका है कि उनको मार्क करना चाहिए क्लियरली ताकि वो कटने से बच जाए। बाकी जो मेनली उसमें जो हमने ऑब्जर्व किया है ज्यादातर वही है पेपर मलबरी है। ठीक है। आपका कोई टेक्निकल, आप तो खैर आपके लिए भी ये इतनी फॉरेन चीज होगी जितनी हमारे लिए, आपका कोई टेक्निकल आदमी है? जी एनवायरनमेंट से है। नहीं, ये बातें जो कर रहे हैं नहीं सर, इसमें जो मायरीन की रिपोर्ट है अगर हमें उसकी कॉपी मिल जाए, एक कॉपी इनको दे देना प्लीज। सर आपकी इजाजत से एक दो पॉइंट में और बता दूं। जी बताइए। एक हमने असेस किया है कि इनको पास कोई सिस्टम नहीं है स्टाफ की गार्ड से लेके डायरेक्टर तक की ट्रेनिंग का, ना कोई सिस्टम है, ना रिफ्रेशर कोर्सेज हैं। इर्द गिर्द केपी में और पंजाब में लगातार मैंडेटरी इन सर्विस प्री प्रमोशन ट्रेनिंग्स होती हैं, एकेडमीज मौजूद हैं, ये उस तरफ नहीं जाते और अपने लोअर स्टाफ को भी ट्रेनिंग पे नहीं भेजते जो हमने नजर आया है। और तीसरा जो आपने एक पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट का बहुत जो बड़ा इशू है वो एलियन इन्वेजिव स्पीशीज का है, तो इसमें आखिर में हमने प्रपोज किया कि ये एलियन इन्वेजिव स्पीशीज की स्ट्रेटजी बना लें। उसमें सबसे खतरनाक एक चीज जो दरख्त तो नहीं है, छोटी बूटी है, पार्थेनियम, जिसको कैरेट ग्रास कहते हैं। क्या चीज? कैरेट ग्रास,
गाजर बूटी। गाजर बूटी। ये पहले इस्लामाबाद में फ्लोरल शॉप्स में इसके छोटे छोटे सफेद फूल होते, गुलदस्ते की साइज बड़ी करने के लिए लगाते थे। हमारे पास कोई लॉ नहीं है उसको रोकने का, लेकिन हम खाना अपने कुछ दोस्तों के साथ वर्दी पहन के जाके छापे मार के, वो हमें पता था हम अरेस्ट नहीं कर सकते, लॉ ही नहीं है, तो उनको समझाते थे। अब अल्लाह का शुक्र है वो गुलदस्तों में नहीं इस्तेमाल होता, वरना वही गुलदस्ता लोगों के घरों में जाता था। तो उससे क्या होता है? उससे आपकी आंखों की एलर्जी, सांस की एलर्जी, और दूसरा वो इतनी खतरनाक चीज है कि आपकी जो देसी भांग है उसको भी खत्म कर देती है पूरी देसी क्या? भांग, कैनबिस। नारकोटिक। जी जी, आपकी इधर हर जगह लगी हुई है, नेटिव है। अगर उसको भंग को खत्म कर दे अच्छी बात नहीं है? नहीं नहीं, जिस अल्लाह ने भांग को इधर पैदा किया, वी शुड नॉट इंटरफेयर विद गॉड्स क्रिएशन। अच्छा, तो ये स्ट्रेटेजी बना ले और किसी टेक्निकल लोगों से बनाए, इनके अंदर मुझे नहीं लगता इन हाउस कैपेसिटी है। नहीं, you have raised larger issues, more larger than the Pak issue, and they are certainly relevant. कुछ आप कहना पसंद फरमाएंगे या you want to absorb it? मालूट बहुत अच्छी है यकीनन तजावीज, लेकिन अगर रिपोर्ट हमें मिल जाए, मैं उसको सीडीए बोर्ड के सामने प्लेस करा देते हैं। आपके हुक्म अच्छा, के साथ, दूसरी और बात यकीनन देखें, कुछ गफलत हुई है। अच्छा हाँ, एक बात और सॉरी आपसे पूछना थी मुझे। जब ये ने कटाई शुरू की, ये पेपर मलबरी के पत्ते नहीं थे, तो फिर भी आप पहचान सकते हैं, शनाख्त कर सकते हैं पेपर मलबरी है या वो पत्तों से? क्यों आमतौर पे तो पत्तों से पता चलता है ना दरख्त, कुछ लोग एक्सपर्ट शायद पहचान भी ले रहे हैं। बार्क जो होती है, बोल्ड की बार्क, मतलब वो बहुत डिस्टिंक्टिव है, पता चल जाता है। अच्छा, एक चीज बताएं, जब ये जो ने कार्ड दी, ये फिर भी इंजूरियस रहेगी पेपर मलबरी या जी, नहीं? ये एक टाइम ऑपरेशन नहीं है, जो इन्होंने काटी थी और आपके हुक्म से जो रुकी है, जो रह गए थे ना स्टम्प्स कटे हुए और इसकी जड़ें रह गई, वो फिर स्प्राउट करके 6 चेंज हो चुकी हैं। और ये इनको 1 साल का ऑपरेशन नहीं, ये 10 साल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसीलिए हमारी गुजारिश है कि वो मुकम्मल स्ट्रेटेजी बना के फिर चला जाए। ये 1 साल के ऑपरेशन क्या, आप कहाँ के रिहायशी हैं? मैं सिर्फ इस्लामाबाद का ही हूँ। तो आप ये, अगर आपको कोई इतराज नहीं हो, इन पे कोई आपको इतराज है? यकीनन नहीं है सर। यू आर व्हाट एज अ प्रोफेशनल, मतलब आप टेक्निकल क्या स्किल है आपकी? अब मैं जरा मल्टी डिसिप्लिनरी हूँ, मेरी पीएचडी एंथ्रोपोलॉजी में और उसमें एमएस फॉरेस्ट्री में और एक्सपीरियंस क्लाइमेट चेंज में। एंथ्रोपोलॉजी में? जी जी, मैं फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ जी? भी हूँ। फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाता भी हूँ। अच्छा, ओके, ठीक। तो ये अगर देखिए, अभी हमने स्टे दिया हुआ है, शैल वी रीस्टार्ट द ऑपरेशन एंड यू कैन यू असिस्ट and make sure it is being done in accordance with? सर मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, आजाद रहने दूं। हाँ, मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मजे कर रहा हूँ, कभी इधर कभी उधर, आजाद रहने दें। ओकेजनली आई एम अवेलेबल टू एडवाइस। ये तो है। इनका जब ये कटाई में आप कर सकते हैं कि सर, उसमें जो हमारे पास तो इतना स्टाफ नहीं होता है कि जो फील्ड में हम जाके परमानेंटली वहाँ पे मौजूद रहें, लेकिन इनके अपने स्टाफ, देखिए इनका अपना स्टाफ को थोड़ा सा रहनुमाई दे देना, सॉरी इंडिकेटर्स दे देना थोड़े से। उसका मैं वो आप ये नहीं कि आप उधर खड़े रहें सारी कटाई के वक्त, कुछ इंडिकेटर्स दे दें एंड मेक श्योर दैट दे आर फॉलोड, दैट्स ऑल। कैन वी आस्क यू टू डू दैट? उसमें सर ये अगर मेरी गुजारिश होगी कि पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है यहाँ पे नेक्स्ट, उनके पास फील्ड स्टाफ्स होते हैं, तो वो अगर वहाँ पे से कुछ फील्ड स्टाफ को परमानेंटली वहाँ पे सुपरविजन के लिए डेप्यूट किया जाए तो मैं नहीं, अभी कम से कम ये F9 पाक का तो कर लेना, पेपर मलबरी की कटिंग कंप्लीट। जी सर। लॉर्डशिप, इनके अपने जो रेगुलेशंस हैं सीडीए के, विच इज सीडीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रेगुलेशंस 2008, उसमें एक बड़ी जबरदस्त कमेटी है जी, सीडीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कमेटी, जिसमें 12 लोग हैं, 7 सीडीए के हैं उसके ऑफिशियल्स, उसके अलावा नॉन ऑफिशियल्स में है प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स, उस करीब को क्या पता होगा दरख्त के बारे इनमें से किसी को भी नहीं पता। इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। It may be, but I'm just saying कि उसमें let's be practical ना। उसमें एक They may be, you can put the chief justice on that committee, but he won't know anything. उसमें एक एनजीओ का भी है और एक फॉरेस्ट का भी है जी। तो इफ दैट कमेटी वर्क्स, अगर सीडीए No, देखिए, we are not interested in committees, we are more interested in results. This is an ongoing operation. We wanted to conclude because paper mulberry causes allergies and it's not otherwise not good. But it was alarming because the way it was being done. तो ये initial stage में आप दो मावनत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं?
गाइडेंस दे सकते हैं. हाँ गाइडेंस if the system is put in place with their guidance, जिस तरह ये depot suggest कर रहे थे, would you like to give guidance on site or would you like to give guidance in their office? both on site and in office. कोई इशू नहीं. उसमें सर अगर ये काटे ना जो मतलब अगर जो हमने जिस नहीं आप जो इनको कहें वही करेंगे सर वो हमने पूरा इसमें मेंशन कर दिया है प्रोसीजर ना कि इन्होंने किस तरह से करना है और वहां पे उन्होंने एक टेम्पररी डिपो लगाए और वहां डिपो पे चेक किया जा सकता है कि अगर कोई और इसके पेपर मलबरी के अलावा कोई कटा है तो वो पता आइडेंटिफाई हो सकता है वहां पे. तो वो अगर उस जगह पे डिपो कभी बनाए कभी दो दरख्त से नजदीक होना कि पेपर मलबरी को निकालते हुए वो भी निकल आएगा, ये भी तो होगा ना. वो अगर आप समटाइम्स यू कांट सेव क्योंकि उसकी झाड़ निकाल रहे हैं तो वो उसकी भी निकलेगी साथ साथ. एक्सीडेंटली कोई हो सकता है लेकिन अगर मतलब कोई ज्यादा मैसिवली उसको हम अब देखिए जरा माइन्यूट में नहीं जाना चाहते हैं मगर जिस तरीके से कर रहे थे वो मुनासिब नहीं था. तो इफ यू कैन प्रोवाइड गाइडेंस टू देम, वो हम put a provide करते हैं. plan in place. आपको कोई इतराज है? जी नहीं है, कतई तौर पे कोई एतराज नहीं है सर. हाँ जी नहीं है सर. क्यों, खैरियत? सर चूंकि बहुत ही अच्छी तजावीज हैं और दोनों माहिरीन ने बड़ी ही खूबसूरती से अदालत की मुआवनत भी की है और जो गफलत सीडीए के पार्ट पे थी उसकी भी निशानदेही होगी एंड विल मेक श्योर कि ये रिपीट ना ये हो. बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मेरी जमीन है, मेरे दरख्त है, ये सबके हैं. जी ऐसे तो ये आपका मौके अगर कोई आपको कोई अच्छी तजवीज है आप बिल्कुल उससे लें. बिल्कुल ऐसे. तो ये हमें ये चीजें पता नहीं थी क्योंकि हमने कुछ वकीलों की मदद ली, कुछ Yes. सहाफियों की ली, फिर हमने कहा दो एक्सपर्ट भी आ जाएं तो उनकी भी मदद है. तो ये अगर क्योंकि ये आपको जो बातें बताएंगे तो F9 पाक के लिए भी बताएंगे और फिर ये दूसरे जो इन्होंने बातें की हैं इन्वेसिव स्पीसीज की और ये कह रहे हैं ना कि आप फॉरेन स्पीसीज को इनकरेज कर रहे हैं, जो लोकल इंडिजिनस स्पीसीज हैं वो आप उनको डिस्करेज कर रहे हैं. ये भी इनकी बात में काफी वजन Yes, है. yes. और जब एक दूसरा फायदे भी होते हैं, जैसे उन्होंने कहा पहले आप इससे फॉरेन एक्सचेंज कमाते थे और आप बाहर से चीज को इंपोर्ट करते हैं अगर कोई बीज को तो वो महंगा होता है, तो लोकल आप उसको सिर्फ एक राह बदलना होती है कि ये चीजें आप करने शुरू हो जाओ. तो वो फॉर वट एवर रीजन अब ये कह रहे हैं कि पाइन इज सो स्लो ग्रोइंग Yes, एंड सो वाटर इंटेंसिव, तो वो उसके बजाय आप दूसरे लगा लें दरख्त जो कि मे बी फास्ट ग्रोइंग एंड लेस कंज्यूम लेस वाटर and climatically be because of it's becoming warmer. Quite a pine is also dying out because of the weather conditions. Yes, So maybe that can be done. So इनसे आप फायदा उठाएं. बिल्कुल सर जरूर. हाँ मुनासिब होगा अगर ऑर्डर में कुछ ये मुनासिब होगा. फिर आप इनको ये देखें सरकारी लोग टाइम तो अपना फ्री में दे सकते हैं, पैसे तो ना खर्च करवाएं ना, फिर इनको आप गाड़ी भिजवाएं, इनको बुलाएं अपने पास. खैर आपके दूसरे वो तो खैर सरकारी, आप तो गवर्नमेंट सर्वेंट है ना. अच्छा तो ये कब करेंगे आप पहली मीटिंग? आज हो सकती है? आज मैं रात सोया नहीं हूँ तो आज तो नहीं. आप बताएं. कल परसों? मैं चाहता हूँ मसला जल्दी हो जाए. कल आई एम बिजी विद नहीं आप अपनी मर्जी की डेट बता दें. कोसार यूनिवर्सिटी. हफ्ता सैटरडे इज पॉसिबल. सैटरडे मंडे भी मंडे को पता नहीं. नहीं आप आपस में आप लोग कोई जल्द कर लें. हम एडजस्ट कर लेंगे. ठीक है आप जल्द करके और ये आप पहला ऑपरेशन करें, इनसे जरा गाइडेंस ले लें एंड डोंट बी रिलक्टेंट टू सीक ये कौन आ गए बाहर से हमें बताने के लिए. मतलब एक होता है ना हर डिपार्टमेंट में ऐसा, तो ये भी आप ही की मदद कर रहे हैं फ्री में. बिल्कुल सर. हाँ सर यकीनन ऐसा ही होगा और ये इनकी गाइडेंस से जो मुझे समझ में आ रही है बात, अभी कोई पॉलिसी वजह करेंगे ताकि दोनों माहिरीन को वो देखें दो अलग चीजें. एक तो इमीडिएट सर ऐसे F9 पार्क है, जी. एक है द फ्यूचर. यस ठीक है उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स में शामिल हो जाएंगे मगर फ्यूचर वो कहेंगे यार ये दरख्त मत लगाओ, इसकी जगह ये लगा दो. यस ठीक है ओके वो तो इमीडिएट हो गई, मगर वो बात वो फ्यूचर के लिए भी कर रहे हैं. बिल्कुल कि आप इन्वेसिव स्पीसीज को छोड़ें. ये इपिल मुझे नहीं पता, इपिल कोई चीज है उसको ना करें, दूसरी इन्वेसिव स्पीसीज को ना करें, ज्यादा से ज्यादा लोकल स्पीसीज को इनकरेज करें. और लोकल स्पीसीज में कुछ ज्यादा बेहतर हैं दूसरों से, यानी कि इन द सेंस के इन अ पार्क यू वांट अ ट्री टू, यानी कि 20 साल वो इतना सा रहे, कुछ चाहते हैं कि जल्दी निकले ऊपर,
शक्ल दिखाया जी। Sir. पाइन कह रहे हैं आप उसको डिस्करेज करें बिकॉज ऑफ वाटर पर्पसेस अदर ऐसे और पर्पसेस। पहाड़ की बुलंदी का दरख्त है, यहाँ पे जमीन पे लगा रहे हैं और उसके लिए पानी। नहीं वो ये कह रहे हैं ना कि जी, ऐसे ही। पेट्रोल का खर्चा आपका ज्यादा, वो यकीनन ऐसे ही। अंग्रेजी में कहते हैं ना पेनी वाइज पाउंड फूलिश, उस पे आप कॉस्ट इतना करेंगे ना कि वो उसके बजाय आप शायद 10 दरख्त लगा सकते थे दुरुस्त। या 20 दरख्त। तो ये जरा इनका आने का थोड़ा मेरे ख्याल में फायदा हुआ है। एक जी यकीनन सर, ऐसे ही एक तजवीज है मेरी सर, अगर दोनों माहिरीन की मौजूदगी में अगर इसका एक मुकम्मल फ्रेमवर्क बना के हम जनाब के पास इसको रिकॉर्ड पे प्लेस करें और किसी ऑर्डर हम में इनको ऑर्डर में लिखेंगे जी ऐसे ही। और कोई बात। सर ये फ्रेमवर्क ऐसे नहीं बनता, हमने प्रपोज किया है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी सीडीए माहिरीन से बनवाए, उस पर खर्चा होगा और वो हम ऐसे एक दिन पार्ट टाइम जाके नहीं बना सकते। ठीक है, लास्ट ऑर्डर Immediate guidelines, आप guidelines जी, from एडवर्टाइज करिए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं आपके। सर हमारा ये सर विद ड्यू परमिशन सर हमारे कन्वेंशन सेंटर भी सर ये यार आप surroundings हो पूरी कौन, मुझे बताओ तो ना, हमारा आप खड़े हो गए, किसको सर, रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप? पब्लिक इंटरेस्ट में सर मैं रिक्वेस्ट करूं अगर इजाजत हो तो। ये आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर आई एम पब्लिक को सर, पब्लिक इंटरेस्ट में। ये हम सब पब्लिक के हैं, 25 करोड़ तो सारों को तो नहीं सुन सकते ना, कोई बताए ना, कोई आप माहिरीन है तो बता दें। हाँ जी मैं सर मैं फॉरेस्ट्री सफर हूँ सर आई मीन इस मलबरी की वजह से हम सफर कर रहे हैं, हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं और ये कन्वेंशन सेंटर और यहाँ पे सराउंडिंग में जनाब वही बहुत केस बड़ी तो चल तादाद। रहा है वकील साहब, वही केस तो चल रहा है। जी सर उसी के लिए सर। फिर थैंक यू। जरा वकील साहब आप ये बताइए, सीडीए के My lord. वकील साहब, आपने 700 मीटर का ठेका दिया था सर। उसने 56 एकड़ के ऊपर सारे दरख्त कैसे काट दिए? पहला सवाल सर। सुन लीजिएगा आप ये सारे सवाल। जब 700 मीटर का ठेका दिया तो कॉन्ट्रैक्टर ने 56 एकड़ के ऊपर दरख्त काट दिए। एक बात, अगर पेपर मरबरी भी काटे अगर उसने, तो किसकी इजाजत से काटे? और आपने क्या 425 की, 426 की और 427 की कार्रवाई की उस ठेकेदार के खिलाफ? पहला सवाल। दूसरा ये बताइए कि आपने कटिंग ऑफ ट्रीज प्रोहिबिशन एक्ट 1992 के तहत उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की उस ठेकेदार के खिलाफ? क्या आपने फॉरेस्ट एक्ट 1927 के मुताबिक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? आपने कुछ भी नहीं किया। ये तो बिल्कुल कागज के ऊपर है कि एक आदमी को 700 मीटर की जगह दी गई कि दरख्त काट दो, उसने 56 एकड़ पे सारे दरख्त काट दिए। उसको इजाजत दी थी 1542 पेपर मरबरी के दरख्त काटने की, उसने 12,183 दरख्त काट दिए, यानी कि उसने तकरीबन 11,000 दरख्त एक्स्ट्रा काटे। क्या कार्रवाई की आपने? और आपने 1542 दरख्तों के 52 लाख रुपए उसको कहो दो, तो ये जो बाकी 11,000 दरख्त जो उसने एक्स्ट्रा काटे हैं, अगर पेपर मरबरी के हैं, उसके पैसे कहाँ गए? मेरे हिसाब से तो टॉकिंग फॉर माई सेल्फ, माई ब्रदर्स माइट एग्री विद मी और नॉट, कि इट्स अ फिट केस ऑफ जो पर्सनल लाइबिलिटी फिक्स करनी चाहिए दी देन सीडीए के चेयरमैन के ऊपर और उस ठेकेदार के ऊपर कि उसने इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है पूरे हमारे पाकिस्तानी कौम के ऊपर। माय लॉर्ड मैं अगर क्लैरिफाई कर सकूं सर। ये तो सारा ठेकेदारी के बगैर उसे नहीं कर रहे हैं। जी आप कुछ कह रहे थे? जी सर, मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ। एक तो सर ये है कि जो वर्क ऑर्डर इशू हुआ था एंड उसके मुताबिक कटिंग हुई है सर, और 52 एकड़ मजमूई रकबा है जिसको फिर फर्दर हमने तकसीम किया हुआ है सर। वो पेज 83 जो मेरी सीएमए है उसकी लॉट ए बी सी बी 4, उसके 4 कंपोनेंट्स हैं जी, और उसमें से जो वर्क ऑर्डर था एंड उसके मुताबिक काम हुआ है जी। मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, और जो आपका की ऑब्जर्वेशन है कि ये कोई 1300 के करीब दरख्त थे, ऐसा नहीं है सर। 1300 की तफसील इसमें लगी हुई है, मुकम्मल तफसील जो है वो मौजूद है, और 13 जो भी 14,000 या 15,000 दरख्त हैं वो सारी की रिपोर्ट भी मौजूद है जी। वो भी मैं अगर आप हुक्म करते हैं मैं उसको फाइल कर देता हूँ जी। और ये 4 लॉट्स say anything from this side? I disagree, Your Lordship. I have set out the exact details of the relationship they had with the contractor in my CMA. And I They believe Your Lordship try to. We're not going to start fixing individual liability at the moment. We are concerned with the preservation. There's a separate issue. We are in 184.3. There may be 10 other wrongs being done. At the moment, we are 184.3. We are focused on the public and the rights of the public.
there may be other issues. So I don't want to detract on these, get bogged down in those things and forget the larger picture. So we're going to focus on that. In that, you want to say anything to Bataएं? Forward going, what the court appointed specialists have said seems reasonable, at least, but it is obviously how will this be implemented? At least whatever framework that the CDA makes with their help, it should be put in before this court for at least a hearing, so that the exact picture comes out as to what they are doing for the future. ठीक है, इच्छा इसमें लिखिए. My lord, I have submitted a proposal in CMA 1878 of 2024. 78 of 2024. Your lordships may consider para 11 on page 5 of the CMA. Achha, is there anything else which we please pointed out? What is this? My lord, page 5, I have submitted a proposal. Para 11. Ji. Your lordship had incorporated that in the order by appointing 2 experts. I had suggested that this was filed prior to the release of your lordship's order. My lord, one thing that is very important is for EPA to get involved. Although EPA is in the supervisory committee that has been constituted by CDA, but there needs to be an independent EIA, environment impact assessment, to be conducted by CDA, by EPA. CDA in its reply has stated that there was no requirement for EIA or IEE, but in my opinion, under the Pakistan Environmental Protection Act Right. This is 1977, cutting of mulberry trees, which all agree My lord. is injurious, My lord. the tree. My lord. So उसमें EPA क्या करेगा? My lord, because तो there नहीं was- काटो. नहीं, क्योंकि उसमें ये भी concern था कि we are not sure even today whether other trees have been cut in the वो तो process. as we are well. attending to that. My lord. My So lord. EPA, what will they say? Their role there will be not relevant. It may be. But in some other- respect of other trees, other species of trees, No, we want to prevail upon CDA that a tree takes 2 decades to kind of get to its proper height. And you come along and you axe it down, it takes a minute. So you plant a substitute in its place. It will take how long? How much carbon it would have absorbed from the air? What beneficial effects it would have had? All that are lost. So we want to ensure that that doesn't happen in this case and in future also. It should not just be one-off, but it should be as a precedent. As the experts have said, that they should have proper planning, which seems not to be there. Maybe there is, I don't know. It hasn't been reflected yet. my lord. So इसमें लिखें. Pursuant to the last, we had appointed two experts to assist the court, namely Dr. Syed Mahmood Nasir, retired Inspector General of Forest. Is it Inspector General of Forests or Forest? Forest. Yes, Forest. And Syed Ghulam Qadir Shah, Inspector General of Forests of Ministry of Climate Change and Environmental Coordination, Islamabad. They have submitted a joint report dated 27 March 2024. Copy thereof has been provided to CDA and to learned amicus. Can we collectively refer to you as the foresters or experts? Foresters too. That is our identity, foresters. अच्छा ठीक है आप जी विनोद हाँ the expert foresters appointed by us have stated that the
CDA does not have in place an appropriate standard operating procedure within bracket SOP, and if they did, the problems which arose would have been avoided. In this regard, it is stated that when trees are cut, they should be put in a depot, DEPOT, and there should be also a full stop. They further point out that the timber the calculation with regard of timber in the absence of a volume table could not have been undertaken, and what has been done is arbitrary. Do you agree? We are writing what you are saying. सर इसको थोड़ा सा rephrase करने की इजाजत देंगे? जी जी. The volume table that they have used is not authenticated by anybody. So we cannot. An arbitrary volume table has been, an unauthentic arbitrary volume table has been used instead. Full stop. It was all full stop. However, the experts, foresters, unanimous state that they have checked with who have you checked that they are injurious, these trees? Apple. Who have you checked with? आपने कहा ये injurious हैं with. जी जी, injurious. Who did you check? With the leading taxonomist of Pakistan, Dr. Tariq Sultan. We checked with what is the word? Leading taxonomist. What does a taxonomist do? Taxonomist जो अस्माउल नबातात जो पौधों के नाम बताता है. And they are who have stated that the paper mulberry tree is injurious, Extremely. and extremely injurious. ब्रैकेट में इसका वो नाम हमने लिखा हुआ है, लैटिन वाला वो लिख दीजिएगा, and should be removed. After removal, it becomes non-injurious. No, it needs continuous follow. No, I mean, can I use a table of paper mulberry, or it's to be burnt only? No, it's you can use a table. It's wood is not harmful. वो तो सर उसके pollens जो है ना, उसका only the pollen is the pollens problem. are harmful. ठीक, Two okay, problems है, pollen है और दूसरा ये space occupy कर लेता है. They further state that if a paper mulberry tree should not only be cut, but its root should also be removed, because if the root is left in the soil, it generates, Regenerate. it regenerates. Full stop. During the hearing, they also referred to another invasive species, another important invasive species, that is IPIL. Though IP twice we do IPIL space IPIL apple twice. IPIL-IPIL. So imported की जगह alien loves use करते हैं. हाँ? Alien loves use करते हैं. Alien कर दे. Alien invasive species, IPIL, which is also being planted by CDA, and that this practice should discontinue. They were of the view, they are of the considered view that indigenous species should be encouraged, such as Amla, Shisham, Chinar, and Kachinal. खैर को ये भूल जाते हैं. खैर जरूर लिख दे KHAIR अकेशिया कैटेचू, ये जान के उसको इग्नोर करते हैं. KHAIR खैर. अच्छा. इसमें से कत्था निकलता है और हम इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं. अच्छा. Full stop. During the hearing, it was also pointed out, carrot grass खत्म हो गई है? बहुत ज्यादा.
वो efforts कर रहे हैं. It's a global problem. Efforts ये कर रहे हैं. There are some biological controls that are available, and they should, if they want, we can. What is the harm in that? आपने क्या बताया था? Extremely allergic causing होता है. अच्छा, it is further pointed out that carrot grass bracket में gajar booty, which is also an alien invasive species, is extremely injurious to health. But ecosystem. But it's whatever, क्या law नहीं इसको कोई. There is no legislation regarding alien invasive species. But there is no legislation restriction on its planting, buying and selling. Full stop. तो ये तो आपका काम है मिनिस्ट्री का. नहीं सर. नहीं, ये मिनिस्ट्री का काम है ना. वैसे सर मिनिस्ट्री जो है ना कोई law मिनिस्ट्री ऑफ making- क्लाइमेट चेंज का काम नहीं तो फिर ये किसका काम है? मिनिस्ट्री ज्यादा पॉलिसी, क्योंकि फॉरेस्ट्री डुअल सब्जेक्ट है प्रोविंसेस. ये आपका है ना इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन. जी सर. तो इसमें पॉलिसी गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन जो अदरवाइज प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो प्रोविंसेस ने अपने अपने लॉज बनाए, उसमें है ये कैरेट ग्रास. उसके अंदर नहीं है. अच्छा, आपकी मिनिस्ट्री में सब सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट सेक्रेटरी एंड यू आर नंबर 2. सर उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, मैं तो फॉरेस्ट्री विंग को देखता हूँ. अच्छा, full stop. Accordingly, it is the Ministry of Climate Change and Coordination, Environmental Coordination, should implement a policy with regard to these matters and circulate it amongst the provinces to enable them to enact legislation, appropriate legislation, if they so deem fit. The lead role to play करें ना, vision वाला role. Full stop. ये next लिखें. Since there is unanimity in the removal of the paper mulberry tree, the restraining order stopping further cutting of such trees from the park is withdrawn, subject to the experts, foresters providing guidelines to the concerned staff of CDA, who will strictly follow the same. In removing the paper mulberry trees, full stop. These guidelines, CDA should also consider the substitute plantation of the species as identified by experts, with a view to ensure that they are indigenous and less dependent on frequent watering. Experts, do you agree? Less dependent on frequent on इसका अल्टरनेट अगर आप इजाजत दें मैं लैंग्वेज बता दूं. इनपुट्स, एक्सटर्नल इनपुट्स, इट्स वाटरिंग इज वन. ये फिर पेस्टिसाइड भी डालते हैं, फिर ये खादें भी डालनी पड़ती हैं इनको. watering and other external inputs, comma, such as watering, fertilizer, pesticides, such as pesticides and fertilizer. दूसरों को नहीं जरूरत होती है. लोकल को तो नहीं जरूरत, वो तो अडेप्टेड है. अच्छा, ठीक है. Okay. The experts have also suggested that CDA should, what did you suggest earlier? ट्रेनिंग अपने स्टाफ की मैंडेटरी करें. नहीं, कुछ आपने और बात की थी. एलियन स्पीशीज की स्ट्रेटजी बनाएं. They should evolve a strategy, long term strategy, a short, medium and long term strategy
in consultation with experts regarding future plantation as well as removal of injurious alien invasive species. All right? ठीक है, ये आप करने के लिए तैयार हैं? यकीनन सर, और ये जरूरी भी है. कंफर्म कर दिया एक्सपर्ट्स ने. The expert says that most of the trees, almost 98-99% that were removed were paper mulberry trees. ऊपर कहीं लिख दीजिएगा तो आप you can breathe a sigh of relief. ठीक है सर, आपका शुक्रिया. एक्सपर्ट्स का शुक्रिया नहीं करें, मगर ये जो तरीकेकार है आपका बिल्कुल गलत है. अगर ने कहा तरीकेकार जो आप सही नहीं कर रहे हो. अच्छा, एक और इशू भी रेज हुआ था कि उधर जो स्ट्रीम्स जा रही है ना, उनको आप ये जो नेचुरल स्ट्रीम्स हैं इनको आप लोग सुएज ड्रेन्स बना दिया है, उसमें कचरा भी जाता है और ये भी जाता है. तो इस पे भी आप स्ट्रेटेजी को डेवलप करें. तो इनकी राय मशवरे अगर लेना चाहें एक्सपर्ट से, आपको हमने 2 जबरदस्त एक्सपर्ट दे दिए. ये पूरे वक्त आपके नहीं रहेंगे. इसमें ऊपर लिखिए, लेट अ मीटिंग बी कन्वीन्ड एट द कन्वीनियंस ऑफ द एक्सपर्ट फॉरेस्टर्स for the initial guidance to be provided to concerned CDO officials with regard to the removal of paper mulberry trees from the park. Okay. Do you want आप इनको जरा केस को पेंडिंग रखते हैं, नहीं तो फिर हमें पता चल जाए. हाँ, it would be appreciated if the expert foresters may time to time visit the park, and if they require transportation, the same will be provided by CDA to ensure that the park is that the matter is being undertaken properly. हो सकता है कोई और आपके suggestions हो with regard to parks, वो भी आप बता दीजिए. ठीक है. To come up after 1 month कर दें. ये प्रोजेक्ट कब तक आप कंप्लीट कर लोगे? ये सर, अब बाहर का मौसम है, अभी तो इस सारे को रिमूव करके फौरन प्लांटेशन करनी है, तो 1 महीना तो हमें हर सूरत चाहिए होगा. फिक्स आफ्टर 2 months कर दें फिर. सर 2 महीने मुनासिब होगा जी, ज्यादा अच्छा. अच्छा, to be fixed after 2 months. चलें, thank you and thank you experts. एक मेरी तजवीज़ है सर, दोनों एक्सपर्ट्स के लिए रेम्यूनरेशन अगर सीडीए को अगर इस पे कोई ऑर्डर हो जाए, मेरा ख्याल है कि शायद इनके लिए, अदरवाइज इसको मैनेज करना, और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, गाइडेंस रिक्वायर्ड होगी इसके लिए, और मुसलसल हम भी फिर इनसे दरख्वास्त भी कर सकेंगे कि हमें हमारी रहनुमाई कीजिए वक्तन फवक्तन. हम यूँ लिख देते हैं, in case CDA wants to engage the services of the experts, वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, उनकी मुश्किल होगा ना, ये रिटायर्ड हैं, they may do so. अब हम इसमें कुछ नहीं आपको हुक्म देना चाहते ना कोई ऐसी बात करना चाहते हैं. आप कल आप पे कोई उंगली उठा देगा, शायद आप और भी एक्सपर्ट करना चाहे, हमें नहीं पता है. ठीक है सर, थैंक यू. बट अभी तो ये आपको इनिशियल तो इन्होंने दे वॉलंटियर, बट इफ यू थिंक देयर एक्सपर्टीज इज यूजफुल, आई एम श्योर यू विल डू इट. सर ठीक है जी सर. चलिए, थैंक यू डॉक्टर्स. थैंक यू सर. थैंक यू. Supplementary list, suo motu case 4 of 2021 along with suo motu 5 of 21, constitution petition 27 of 2022 and constitution petition 4 of 2024. जी, Mr. Heather Waheed is not available. अच्छा, okay. Mr. Salahuddin Ahmed hasn't scared you away, has he? जी,
Can you just remind where we were yesterday, the day before? My Lord, I had pointed out the two aspects to my petition. One is the habitual misuse of the PICA law by FIA. You had mentioned the cognizable, non-cognizable offences. Ji, sir. Then your main point was the law is not bad, its application is wrong. My Lord, I made both contentions, that one, that the law is being misused, two, that a part of the law is also ultra vires. Which is that part? Ji. Sir, section 20, agar aap, I read it out last time also, section 20 of the PICA law. Whoever intentionally and publicly exhibits or displays or transmits any information through any information system which he knows to be false and intimidates or harms the reputation or privacy of a natural person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years, or with fine which may extend to 1 million rupees, or with both. Now, my Lord, as your Lordship had also mentioned on the last date, the Islamabad High Court had actually struck down section 20, the part of it that deals with injury to reputation. I have the, sir... Is it reported judgment? No, sir, I don't think it... But Is it in any of these paper books? अच्छा. ये पूरा judgment है? No, sir. There are some other judgments which I'll be referring to. I thought this would be easier. Which page? So the first page, sir. It was only a short order. Can we read it? Ji, sir. For reasons to be recorded later, petition. Have the reasons come? No, sir. I don't believe they have. Achha. Okay. For reasons to be recorded later, petitions are allowed, and it is declared and directed as follows. Freedom of information is a fundamental right, and it reinforces all other rights guaranteed under the Constitution. Free speech protected under Article 19 and the right to receive information under Article 19A of the Constitution are essential for development, progress, and prosperity of a society, and suppression thereof is unconstitutional and contrary to democratic values. C, the criminalization of defamation, protection of individual reputations through arrest and imprisonment, and the resultant chilling effect violates the letter of the Constitution, and the invalidity thereof is beyond reasonable doubt. The Prevention of Electronic Crimes Amendment Ordinance 2022 was promulgated in derogation of the Constitution and the fundamental rights guaranteed thereunder, particularly Articles 9, 14, 19, and 19A. The jurisdictional preconditions were also not in existence. The Prevention of Electronic Crimes Amendment Ordinance 2022 and promulgation thereof is declared unconstitutional, invalid beyond reasonable doubt, and it is therefore struck down. The offence under Section 20 of the Prevention... The whole ordinance has gone. Sir, वो एक amending ordinance आई थी, वो strike out, down हो गई. उसके बाद एक act आया है, sir. अच्छा, okay. जी, sir. And then F, which is relevant. That is not relevant. Ji, sir. Ji, sir. Okay. F, though. So the judgment has been implemented. Ji, sir. And I don't believe that any, the learned Attorney General will correct me, but I don't believe any appeal against this judgment has been preferred. No, but if the law has been amended, then... नहीं, sir. जो F, अगर देखें, F वो original ही था. Okay, let's read it. G. The offence under Section 20 of the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, to the extent of the expression or harms the reputation, and the punishment thereof is unconstitutional, invalid beyond reasonable doubt, and is therefore struck down.
Then proceedings against petitioners in connected petitions are consequently a nullity and are quashed. Agreed complainants. Then, my lord, H, federal government is expected to review defamation laws and the Defamation Ordinance 2002 and thereafter propose appropriate legislation to Majlis-e Shura for making its implementation effective. I don't understand this. What does this mean? My lord, H. What does it mean? my lord, as What far precisely? Could you? I don't know what it means. It's very generalized. yes, sir. अच्छा चलें आगे पढ़ते हैं. Sir. The Ministry The of Secretary, Ministry of Interior, Government of Pakistan shall probe into the conduct of officials of the cybercrime wing of FIA, which had led to widespread abuse of powers and the consequent grave violations of fundamental rights of the citizens. Court expects Secretary, Ministry of Interior will conclude the probe within 30 days from date of receiving a certified copy of this So for order. our purposes, you are the only relevant bit is F. Jesus. The rest is not relevant for our purpose. Yes, sir. ठीक. But although it does note that FIA has been abusing its powers generally, that is the second aspect. I'll come to that later. Now, Or harms the reputation. ji, So sir. you want the words. Now let's read section 20 again. Ji, sir. Whoever intentionally and publicly exhibits or displays or transmits any information through any information system which he knows to be false and intimidates or harms the reputation or privacy of a natural person shall be punished So with imprisonment. you just want or harms the reputation deleted. My lord, and I would additionally urge that even the or privacy is too vague an expression to be permissible under the limited scope of the exceptions to Article 19. Your lordship will appreciate Read Article 14. sorry, Article 14. Article, ji sir, dignity sir, Privacy तो वहाँ आता है. ji sir. The dignity of man and subject to law, the privacy of home shall be inviolable. No person shall be subjected to torture. Now, So why privacy you want to expose? my lord, my submission is that Article 19 का scheme ये है कि the restrictions that you impose on the freedom of speech, first of all, you have to define them through a law. No, but Article 14 gives privacy of home. Bilkul, sir. So the question over here would be, is this offense relatable only to privacy of home? Because what it is applied to is that this is our private, if a journalist is reporting on some public official's conduct, he says, this is my private affair, you have breached my privacy, and therefore the FIA should pick you up. That is the problem, sir. you can't just throw out privacy. You can qualify it. Yes, sir. Bilkul. How would you qualify it? What happens is, sir, No, what happens, छोड़ें. जी, Again, that's मैं case law के you the best law you can misuse. जी, So that's we're going to. How would you like to qualify privacy? my lord, the same way that if there is some particular kind of thing that they are looking to stop, That is, can someone photograph you in your sitting room, washroom, or wherever? I would imagine you will say no. yes, sir. So how would you attend to something like that then? My lord, that is the function of the legislature. The reason is, That's not defamation. It's privacy. जी, sir. जी, sir. He's not, I'm just someone is taking pictures of you. Yes, sir. So there is no defamation here. It may be defamatory as well, but that's another aspect. But Yes. generally, it's not. It may be, It's just a privacy issue. It may be a breach of privacy issue. Now, If you take out privacy completely, then people will be leaning over the wall and taking pictures of you, and they find that they can't do anything. Yes, I appreciate your lordship's point.
that has to be protected, and it is a permissible object under the exceptions to Article 19. What I'm saying is that if the law is vague, it can cover everything and nothing. That's why I'm saying, can you suggest some qualifying words that we can then interpret Section 20 in that manner and restrict its scope? That's what we are asking you. My lord, it would be, I mean, I could come up with some formulations right now, but there may be things I miss, and it may be too broad or too By narrow. all means, you can supplement them later. I'm not saying give an answer now and then, because when I put it to you that or harms the reputation, you're saying this is domain of defamation. If there's a thief, I call him a thief, I'm not defaming him. But of course, I'm harming his reputation. So, but then the burden will shift on you, and I can sue you for defamation or whoever the concerned person is. Point taken. When you, because the judgment of Justice Athar Manila does not talk about privacy. No, it doesn't. He left it out. You want to introduce something new now. Yes. So we are going to do that under 184(3). Yes. Zara sa soch le, kyunki like you said, na, it could have that someone is taking pictures of your child. Would you want that? That is, Even if the child is not in your home, would you, in a park, would you like someone taking pictures of your child? no, sir. So don't do it. You can complain and it may come to haunt you. Sir, agar aap section 24D dekh lein, when they want, they specifically define it. No, you do it. You define it. Zara agar dekh lein, sir, section 24D. 24? D. B or D? B. It's a B, D to hai. D. 24C and 24D. No, that's an extreme case. Let's not go there. I'm talking about normal. Your child is playing football in a field or cricket or whatever. Would you want your child pictures taken? D covers that also, sir. Agar aap 24D cyber stalking wala jo hai, take a photograph or make a video of any person and distributes it or displays or distributes it without his consent. मुझे तो नहीं मिल रहा ये 24D sir. Small d, sir. 24 A B D का okay, small B. अच्छा, okay. Ji, sir. वो मैं alphabet अच्छा, okay, fine. हाँ, okay. Take a photograph or make a video of any person and displays or distributes it without his consent in a manner that harms a person. ऊपर फिर है watch or spy upon a person. C में watch or spy upon a person in a manner that results in fear of violence or serious alarm or distress in the mind of such person. Now, if So you are saying that 24 attends to all privacy issues. it attends to some of them, there may be other legitimate privacy interests. But in order to protect them, they have to actually formulate a specific law protecting a specific thing. If you just say that anything that breaches privacy is illegal and punishable with imprisonment, that is an overbroad, overgeneral curb on the freedom of speech. That falls afoul of Article 19 as per the case law developed on this subject. Can you articulate something precisely on this? You don't have to do it now. You can file something on this privacy, keeping in mind what 24 hasn't already covered. So those kind of things, or so we can come back to it. Can we move ahead? Sir, bilkul. Sir, as far as Article 19 is concerned, as I was saying before your lordship, sir, that in your petition you don't challenge this, or do challenge? My lord, I have pointed out that this the privacy aspect of it has not specifically been dealt with, sir. The privacy aspect of it, but Article 19 obviously has been reverted to, sir. Again, there are two ways to do something. One is to strike down something. Yes. The other is to read down something. The third is to interpret something. Our interpretation also in a way becomes a law.
So keep all these three aspects in mind, because I don't think we should do striking out, but maybe we can do the next two, My lord. unless you can persuade us otherwise. My lord, let me begin with Article 19, sir. Zara. Sir, उसमें तीन चीजें important है. One is that the exceptions to freedom of speech is Reasonable. one, that it has to be reasonable. And Number imposed by two, law. it has to be imposed by law. Take- Number three, it has to meet one of the 7 objects mentioned in I find 8, you find 7. my lord, Let's start counting them. Glory of Islam, integrity, security, or defense, I treat them as one, Yes. sir. 2, Two, friendly relations with foreign states. Three. Public order, 4. decency or Five. morality. 5. No. Decency is different from morality. Then it'll be 8. So Okay. I treated decency and morality as part of the same, but then it will be. I know there's common ground, but I think they're two ठीक- different. ठीक है, sir. And if the Constitution has used 2 different phrases, Fair enough, who are we to Fair dilute there? Fair enough, sir. Then in relation to contempt of court, and then this is important, sir, commission of or incitement to an offense. I think this is the most important one. Yes, sir. Because your lordship will appreciate that before the 4th constitutional amendment, this specifically included defamation. Defamation was omitted. Defamation was, instead of commission of, it used to be defamation or incitement to. Defamation was there in the original Constitution Ji, sir. and was removed by the 4th Amendment. Ji, sir. When was the 4th Amendment? So that was 1975. 21st November 1975. And removed 21 नवंबर 19 different laws. पता नहीं इसके laws मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या laws हैं. Electricity Act, Protection of Pakistan Act, Immigration Act, को पता नहीं 50-100 laws हैं. Cyber laws. ठीक है. When you're dealing with a specific crime under a specific law, and that law provides for a particular methodology, you can then not use the general power of FIA. Then you have to use that law. जब आपने पीका का करना है कानून, हो सकता है आप दूसरे कानून में बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं. जब आप पीका के तहत आप कोई चीज कर रहे हैं तो पीका की रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करेंगे. ये तो नहीं कि आप एक जनरल अपना प्रोविजन डाल दिया उसमें. भाई 160 अप्लाई नहीं कर रहा है, ना बता रहे हैं. अगर कॉग्निजेबल है तो फिर लिखें, इनकी बात सही है. अगर कॉग्निजेबल है तो फिर क्राइम नंबर बताएं, एफआईआर नंबर सो एंड सो, ये सेक्शन है सो एंड सो, इसमें आपको तलब किया जा रहा है. नॉन कॉग्निजेबल है, फिर जाइए मजिस्ट्रेट के पास. यू कैन पिक एंड चूज. यहाँ से जनरल लॉ उठा लिया, मगर जा रहा हूँ पर्टिकुलर लॉ में, उसका प्रोविजन इधर लगा दें. जब आप पर्टिकुलर लॉ में जाएंगे उसके फिर लवाजमात जो होंगे, जैसे इसलिए हमने इनको मना किया, नैब का आप मत पढ़ें, नैब के अपने लवाजमात हैं. जी. My lord, So because we are dealing with a specific law.
So you have to attend to that law. My lord, he is using the general ambit of FIR law. Section 44, subsection 4 of PICA. Section 4. Section 44, sir. Subsection 4. ये मेरे ख्याल में किसी और ने ना करने अब आज जो दूसरे उसमें केस उन्होंने में कहा- काफी टाइम निकल गया. It says that to the extent not inconsistent with this act, the procedure laid down under the code and the Kanun-e-Shahadat shall apply for the purpose of PICA. So it is the code of criminal procedure. हाँ, which but process he's has to not apply. referring to that. He's referring to FIA Act. No, sir. My lord is right. This is a special law. The process Because provided in you this law has have to got follow. many powers. Yeah. So Ji, when there you are several use laws a which have to particular be law, you enforced. follow. If it has a particular provisions, then you follow those. If you're doing this one, you follow those ones. So if for example, this act was silent about what process will be followed for the purposes of Then you can inquiry, go to then the- of course you can go to the court. But if this law is specifying, then you cannot. So to that extent, इनके आपकी अभी कोई immediate anxiety तो नहीं है ना? My lord, anxiety है that the inquiries are pending. Under the FIA Act and the भाई, मैं interpretation. आपसे तदवीन सलाउद्दीन साहब कोई immediate anxiety है बता Sir, दो. arrest. क्योंकि ये तो इन्होंने आपके दो उड़ा दिए ना वो फाले वाले. Sir. ये आपको कोई अरेस्ट नहीं कर रहे. आप इनको कोई चलिए इनका स्टेटमेंट लिख देते हैं नहीं कर रहे हैं आपको अरेस्ट. ठीक है Sir, there हम was. इसको चलाएंगे फिक्र ना करें. अब 2 बज गए. I'm fine, sir. I'm just आपकी अपनी pointing out. सहूलियत की डेट भी दे देंगे बता देना. And we don't want to rush through things which creates a bad precedent. all. We want to understand it properly so it has a lasting effect and leaves no loopholes in it either. So because you need to consider that other provision जो हमने आपसे बात की. वो मीशा शफी. नहीं मीशा जबी का तो वो देंगे उसमें ऑलरेडी आई डोंट वांट टू अदरवाइज वील हैव टू इशू देम नोटिस फिर ये ऑल अटक जाएगा. यू कैन डू इट लाइक दैट वी कैन क्लब दैट विद दिस वन बट इट मे आई डोंट नो इफ यू वांट दैट. If we are dependent on the council there, they may not be available. फिर अजन होगा. So let's wrap it up. I want to wrap this up as fast as possible. Sir. But after giving you a full hearing. Sir. And the other matter is of this lady whose case has come between our meetings. वो क्या होता है committee की. तो हम आज के जुमेरात है बुध है. आज बुध है सर. हो सकता है कल हम मीटिंग में इनका केस लगवा लें देख लेंगे ठीक क्या है है. सर. ठीक. नहीं है तो फिर आप ही इनकी बताइएगा. ठीक है. Please understand powers of the child justice have been diluted. किसी को ये बात समझ नहीं आ रही. मैं रोजाना ये बात बताना पड़ती है. आप पहले बस I'm not all in all. Now the committee is all in all. True, sir. So unless I may not be happy, but that's how the lay of the land is. Okay, so when is it convenient? I was just, my forlorn face was only if your lordship was adding to my burdens. Which is? Your lordship will appreciate 2 of the journalists. Huh? If your lordship was adding to my professional burdens when your lordship says नहीं तो आप ही कर लीजिएगा वो मुझे जरा नहीं because her case is not before us, sir. So Fair that's enough. how can we hear something which is on a not lighter before- note, sir. on a So lighter वो क्योंकि that's also 184. That has to run through the committees. You know, I don't want to say all these things, procedural things. She won't understand these things. So I'm telling you, कि भाई that has a procedure. अब if you adjourn it after Thursday, हो सकता है ये वो भी आ ठीक है, जाए sir. केस में अगर उनमें there's some new stuff she's saying. ठीक है, tell us a date of your convenience. Sir, अब आप किसके लिए है? PFUJ और RIUJ की तरफ से मौकिफ अलग है जी नहीं मौकिफ आप लोगों का एक है सलाउद्दीन का या फर्क है? एक ही है, इसमें हम कुछ चीजें ऐड करना अच्छा नहीं करेंगे अभी तो इनको तो खत्म करने देना. तो ये अब अगर ये कोर्ट में जमा करा दे करें तो नहीं यार नहीं जमा करें वो जैसे जमा होती है जमा हो जाए. एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्लीज फाइल एनीथिंग यू वांट. वो मैं कर देता हूँ. एक ये लॉर्डशिप बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये बहस ना कीजिए ना कि 2021 में एक लॉ बना था which is an act of parliament protection of journalists and आपने क्या media खूबसूरत बात की थी. एक लॉ बना था which is an act of parliament. I'm sorry just रोजा का भी असर हो सकता है. एक लॉ है जो प्रोटेक्शन फॉर जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल एक्ट 2021
ये बिल्कुल अभी इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसमें ऐसी कोई बातें जो ये बात कर रहे हैं, योर लॉर्डशिप बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, फिर देखेंगे उसको। ये बड़ा रेलेवेंट नहीं, हम देखेंगे जी जी लॉर्डशिप। अब की वक्त आएगा हम देख लेंगे ना, अभी तो हमारे सामने नहीं है ना, बिल्कुल खत्म करने दे, आपको भी सुनेंगे, आपको जल्दी में तो नहीं है। नो नो नो, हाँ, प्रॉपर ये तो कराची से आ रहे हैं, आप तो यही हैं। नहीं नहीं लॉर्डशिप, आई एम हियर। तो लेट अस हियर हिम एट हिज डेट ऑफ हिज कन्वीनियंस। योर लॉर्डशिप, व्हाट इज द डेट ऑफ योर कन्वीनियंस? Before Eid or after Eid? Any date of your convenience. I mean, we can hear it tomorrow. No, except tomorrow. Any date of your convenience. Whatever you. I was tied up with some other case of yours. Next Tuesday? ठीक है। हाँ, ठीक है। Sir, And if you want earlier in the day, बता दीजिएगा. Just remind us. Sometimes we don't realize if you want to go back the ठीक same है, day. early in the day is fine, sir. ठीक है, no. तो 2nd of April. ठीक। सर एक और रिक्वेस्ट थी जी। लॉर्डशिप हैज सर, वो पुलिस की वो रिपोर्ट आई थी इन मतीउल्लाह जान एंड अबसारा। हाँ हाँ हाँ। वो कुछ मजीद आपने फाइल किए रिपोर्ट्स? And We have unknown. So the two cases in Absar Alam's case, the two people who are not in Pakistan, उनके red warrants के issue करने का process आपकी इन proceedings के बाद हुआ है। उससे पहले 1.5 साल में कुछ नहीं हुआ। So क्या this process weekend, हुआ है? the issuance of red warrants, blocking of their CNICs. Red warrants to Interpol. G Interpol. So Okay. that process has begun. The warrants were obtained and the process has been initiated. वो पुलिस से गया है, वो FIA के through, interior के through FIA and then goes to Interpol. Their CNICs have been blocked. Nadra has blocked एक them. चीज देखें, one thing we don't want to do, we don't want to. You do your investigation. Unless you're not doing your investigation, we'll intervene, or you're favoring someone. My lord, So, but how you doing your investigation? ये आपका सवाल दीजिए, ये आप इसमें नहीं Candidly इंटरफेयर speaking, करेंगे। ये इन्वेस्टिगेशन आपके इस केस के टेकअप होने के बाद हुई। अब ये बस हो रही है ना, बस अब शुरू हुआ है, अब काम शुरू। अब if you want to have a meeting with the victim, apprise him what the progress of his case is. The concerned police officer can do so. ठीक है। I mean, after all, naturally, the victim wants to know जी, what's you doing with his case. Because एक तो who's his interest, it's not our interest. So I don't want to in any way jeopardize one way or the other the investigation by some remark in the Supreme Court, which is then tomorrow splashed on the media and completely wrecks up either your rights or his rights, or the person who's not before us, his rights or her rights. Investigation is your domain. If they complain that you are not doing it properly or something like that, then we can look into it as a general principle, not at specifics. I don't like going into specifics in these matters unless आप हमें persuade करें to go into specifics. That's a different thing. ठीक है sir, we'll keep them informed and in the loop also. Can they be informed progress, of yes. what's happened, or inform Mr. You are representing them now? जी सर, सर मैंने रिपोर्ट देखी थी इन अबसार आलम्स केस, एक और there has भी been file some progress. In Matiullah's case, it has basically been an eyewash. And there is one, the request that I wanted to make, sir, is that there is one gentleman who clearly seems to have information about this, both crimes of Absar Alam's and Matiullah's. And he has reported his interview on that, on the subject. तो उनसे शाहिद मेतला साहब हैं, उनको कम से कम बुला के उन्होंने जो कहा, बुला लें शाहिद मेतला को। सर 2 दफा तो उसको नोटिस किया है 160 का। अब 160 का नोटिस, जैसे इन्होंने कहा है कि 160 का नोटिस का तो कुछ नहीं कर सकता है, वो एज अ विटनेस ही उनको इसी इंफॉर्मेशन के लिए किया था। अब उनका क्या करें ये बताएं मेरे। तो अब देखिए यही इशू आ जाता है ना, तो फिर आप उनको 155 का नोटिस नहीं देखिए, अब देखिए अब देखा आपने क्या हो गया, अब उनको बुलाएं कैसे, या तो आप पेश कर दो इनके सामने। उन्होंने ये 2 लाइन का जवाब भेज दिया, उन्होंने 2 लाइन का जवाब भेज दिया, वो खुद तशरीफ नहीं लाए, 2 दफा 160 का नोटिस भेजा है। वो उन्होंने कहा कि मैंने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था, बस वो इंटरव्यू पब्लिक डोमेन में, and that's about it, and then the matter. सर वो इंटरव्यू अगर नहीं एक सेकंड ना, now solve this also ना, how to get him, भाई आपने सही लिखा नहीं लिखा, वो एकदम से कोई कार्रवाई कर बैठे,
So he says, basically says that I don't know who has abducted him, and whatever I had to say was in an interview which is in public domain, and this is just a line and a half which he has sent us. वो भी जर्नलिस्ट है. He's also a journalist, I believe. हाँ? Yes, Jesus. yes. सर उन्होंने जर्नलिस्ट वर्सेस जर्नलिस्ट हो जाएगा. जी, सर उन्होंने बेसिकली इंटरव्यू किया भाई था. देखिए एक सॉरी टू से, या तो आपको इतनी क्रेडिबल है कि कोई हर्फ है आखिर है वो लिख दिया है. क्या क्या खबरें चलती हैं जो आप क्या बताएं. अभी आपको मैं कल की गलत खबरें बता दूं, कल की गलत खबरें चीफ जस्टिस के मुतालिक बता दूं आपको. बड़े सहाफी बन गए, गलत खबरें. अब उनको मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं, अगर आप पूछना चाहें बता भी देंगे क्या गलत खबरें चल रही थी. ठीक है, तो वो आपके हाँ जी उसका ये आ गया, बस मैंने ये कह दिया, बस खत्म. तो फिर ये इनसे राब्ता कैसे करें? आप ही के दोस्त हैं, आप ही के मेंबर हैं, पेश कर दें इनको. अब वो उनको 160 की नोटिस दें, वो मसला हो जाएगा. 155 की नहीं दे सकते. करें क्या? ये करें क्या? बता देना, सोल्यूशन भी बताइए ना सलाउद्दीन साहब. अब आप देखिए, इसलिए आप कहते हैं ना, जो ये चीजों को इंटरप्रेट करने में आपको हमें हर पहलू देखना होता है. अब मिटला साहब कल कहेंगे जी आपने मुझे अच्छा खूब फंसा दिया, मेरे खिलाफ FIR आ गई है. सर मेरी सजेशन ये थी कि अगर कोर्ट उनको बुला ले, अब हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन गए. नहीं, he is more likely to take that seriously. And he may come and just say whether what he has stated in his... हम अब उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे. नहीं, बिल्कुल नहीं सर. कोर्ट मगर जनाब के बुलाने से नोटिस भी देखिए सलाउद्दीन साहब, you tell us, will we be acting in accordance with law? We'll do it. Tell me some provision where we could do it as a commission, but that's nothing to do with the police investigation. Police investigation, we have no powers. We can quash it, but we cannot investigate a matter. It's not. Yeah, nor are we acting as a commission of inquiry where we can summon, or under some other powers we are exercising. Again, it cuts both ways. All these things you have to think very carefully. So that's why it's good that you are here to assist us on this. You tell us a provision, we'll use it. Abhi kar dete hain. My lord, Don't say just do it. 184.3, there is no specific provision on that. But if your If lordship he is part of your community, why is he not helping the police? My lord, not everyone in the community is always on the same page. नहीं, नहीं, वो There is no community, ये whether देखिए ना the फिर bar or anywhere. जब ये अब कैसे उनको बुलाएंगे? My lord, with your permission. नहीं, ये आपके वकील हैं सलाउद्दीन साहब. या तो सलाउद्दीन साहब को आप डिसएंगेज कर दें. You said नहीं सर, मैंने रिक्वेस्ट की है, उन्होंने आपकी परमिशन. No. सलाउद्दीन साहब ने देखें फिर वो Sir, ये we don't want to affect people's third party rights by some comment. My rights, sir. If I cannot speak for my rights, then nobody else has the right to do it, sir. मैं आपसे permission seek कर रहा हूँ, sir. एक बात. He is your counsel. We don't give you permission when a person is represented by counsel. As simple as that. Sir, ये suo motu. I am the victim. If you don't want to hear me, I don't. Don't put words in my mouth. Don't put words in my mouth. So the thing is, suo motu. Please don't argue. Sir, वापस police. Mr. Salahuddin, this is not fair. Mr. Salahuddin, I'm calling you. Don't stand behind. Mr. Salahuddin, we are talking to you. Why are you not coming forward? See, either you withdraw your wakalatnama. Who is stopping them? What are we doing? What are we sending these police reports for? ये तो बात नहीं कि वकील एकदम पीछे हट जाए, उसको करे आगे कर दो उसको. ठीक है, ये हम आपको इज्जत करते हैं तो फिर आपको हम इज्जत देते हैं. हम आपको तो नहीं कहा कि आप इनकी वकालत करें. आप छोड़ दीजिए इनकी वकालत, इनको हम सुन लेते हैं. ये तो नहीं हो कि आधा सुनाओ फिर आधा सुनाओ. हम ये नहीं इस तरीके से चलेंगे. कोई प्राइवेट पार्टी है करे यार वकालत, आपके कान में बता दे, आप मुझे बता दें. कुछ तो डिसिप्लिन हम रखें ना. ठीक है, आप बताएं what you want to do. We tell them now to do it. So far, who are we doing it for? Who are we doing it for? Sir, to get to the truth, sir. No, not to get to the truth. We are doing it for the victims. Mr. Qayyum Siddiqui, Mr. Toor, he went away. Atiullah Saab didn't want to sign it. Still, we are saying we are interested. So why don't you sign it? Why don't you file a petition? No. So why aren't you doing it? I'm kidding. You can advocate on his behalf. Very well. Tell us what you want done, what sort of notice you want sent. We'll tell them if it's possible, they'll do it. Sir, if you want to have a private meeting with the office of the Attorney General, do so.
वो भी हम कह देते हैं कि आप उनको, शायद आपको अभिषेक नहीं पता है, बाद में बता दीजिएगा, इसके तहत कर दीजिए। जो इश्यूज वैसे इनकी इन्वेस्टिगेशन से हैं वो तो मैं नेक्स्ट डेट पे आपको इन डिटेल बताऊंगा। देयर आर मेनी इश्यूज, वकूए की भी, वीडियो रिकॉर्डिंग्स की भी, सीसीटीवीज की भी वगैरह, वो तो सब विल टेक सम टाइम। आई शो योर लॉर्डशिप्स द डिलिबरेट डिफेक्ट्स इन द इन्वेस्टिगेशन। ये वाला मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था क्योंकि देयर इज अ जेंटलमैन हु सेज दैट I talked to such and such gentleman, and he had. We understood that. Yes. But that gentleman said, "I'm not coming to you." So then they should go to him. That is, in an ordinary police investigation, if a witness says, "I don't come," so the police doesn't sit down and close the file. कि वो आ नहीं रहा था। कल वो बयान आ जाएगा जी, हमारे घर पे छापा। I mean, you know, देखें ये बातें, कल आपके साथ ही होता, आप कहते हैं जी वो छापा मारने आए। The most convenient, that's why the middle way that I was suggesting was that perhaps if the court could give him notice. I'm not saying that it's not a, it's not a compulsion. You don't understand, we are not the investigation officer. We can facilitate investigation. We cannot take over It would, investigation. my lord, if your lordship was to ask him this, even it would facilitate the investigation. Suppose he If he says comes yes, to court, it becomes 161 statement. क्या no, बात कर रहे हैं ना? then your lordship would refer him to the police refer officer. क्या? वो कहेगा मैं नहीं जाता हूँ फिर। ये देखिए ये आप जब ये बातें होती है ना बड़े सोच समझ के, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि एक तरफ आप जर्नलिस्ट की राइट्स हैं तो वो भी जर्नलिस्ट है। अब वो नहीं आना चाहता है, आप कह रहे हैं उसको आप पकड़ के ले आओ इधर, हम क्या करें उसको? आप 160 की नोटिस वही बात करेंगे जो आप कल वो आ जाएगा करने को। ठीक है sir, we'll try and help us to help Sir, yourself. We'll try and work on it on our level, and if not, then I'll make an appropriate That's why application. you don't realize when you're setting precedents, the same precedent comes and bites you in a later case. You never thought of it that it would be applied this way, but it applies that way also. And since this is the last court, we are very careful of each order we pass, because there's no appeal. End of story. खत्म हो गया। आपके केस में खैर अब अपील हो गई है, मगर फिर भी बहुत मुश्किल होता है अपील करना। So ये जरा आप देख लें, but Mr. Attorney General, what we can say, if Mr. Salahuddin provides you a solution, please hear him. No, absolutely, sir. There is बिल्कुल करेंगे. Police is absolutely interested in examining him, interviewing the witness, but there has to be a Salahuddin Saab, way to actually things are have him changing. come forward. Things are changing. Please appreciate it. This is not the same office of the Attorney General. You've seen where Attorney General give him credit, where no cases he states it candidly. So No, I always give him. don't always do it when he's in the wrong. Contest him strongly, but where he is conceding, where he is giving you cooperation, then just because on what power am I issuing him thing? He's not committed contempt that I can call Mr. Metula here to issue a contempt notice. So I become the investigation. We rather will become an investigation officer. फिर कल को बयान होगा तो कहेंगे जी सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था, तुमने यहाँ कहा था। हमारे सामने कोई बात करेगा उसकी वैल्यू नहीं होगी एज अ 161 स्टेटमेंट, या वो 164 रिकॉर्ड करे। यही दो तरीके होते हैं ना, और हमें तीसरा तरीका नहीं पता है। या वो कन्फेशनल वो यू कैन 164 में आ जाए या 161 में आ जाए। अब उसको समन कर सकते हैं या नहीं, वो तो अक्यूज नहीं है ना, उसने एक प्रोग्राम चला दिया, ठीक है। अब आप फिर कहेंगे जर्नलिस्ट फ्रीडम, वो आ जाएगा कल पिटिशन लेके, मेरी जर्नलिस्ट फ्रीडम को क्या हुआ? मैंने एक प्रोग्राम किया, आपने मुझे बुला लिया अपने केस में। तो देखिए ये चीजें आप लोग को, इसीलिए हम कह रहे हैं, पर हमें सोच फूक के पैर रखना है। आपके कोई मसला है उसको हम आज हल करते हैं। That's why they're not arresting. We are recording your statement. You're not arresting anybody. Absolutely, man. ठीक है, चलें। ये लिखा हुआ है मैं पहले या नहीं लिखा हुआ है? ये पहले लिखा हुआ था, मगर उसके बाद एक बंदे को तो अरेस्ट किया था फिर भी। नहीं, हमने लिखा हुआ है। कौन सा ऑर्डर था बताएं? The order was the statement was। नहीं, ऑर्डर बताइए। जी सर, डेट थी उसकी। वैसे कौन सा ऑर्डर है? जी मैं बता रहा हूँ सर। Usually the Attorney General doesn't violate court orders. Sir, it was 29th January. What happened? Oh, no criminal. It's page 3 of that order. पढ़ें? Learned Attorney General states that honest criticism of a judgment or an order is not a crime and no coercive action will be Where are taken. you reading paragraph? No, sir, ये
type page 3 of that order, top paragraph. Third line. The Attorney General states that honest criticism of a judgment or an order is not a crime and no coercive action will be taken, no criminal case registered in this regard, and extends an undertaking on behalf of the federal government. After this, the FIR and no arrest. criticism or judgment तो बताएं उस किसी को arrest case basis पे तो हम इनको contempt notice So देते हैं. then the undertaking should be for the what I have challenged here, the inquiry, the subject matter. No, of now this case. in the inquiries we can pass an order. Agar ऐसा, I'm not aware that we had passed such an order, but if we had, just remind No, me. no, my lord, and just to take this further, the undertaking still stands. The FIR registered against Mr. Asad Tur, the contents of the FIR, and when I had stated before your lordship that the contents of the FIR do not make out an offence which was charged, for which he was charged, and that was the end of the matter there. Criticism of an honest criticism of the judgment is not something for which anybody has been charged after this undertaking has been given. There's no instance. No, they want assurance that the notices that you have issued, no one will be arrested till the next day. No one will be arrested there. चलो हम ये लिख देते हैं. Yes. इसमें लिखिए. Mr. Salahuddin Ahmed, learned Mr. Salahuddin Ahmed continues his submissions. It is now 2:25 p.m. and as suggested by him, adjourned to Tuesday, 2nd April 2024. Full stop. Learned Council submits that number of notices were issued by FIA under section 160 of the Criminal Procedure Code 1898 to journalists, and he apprehends that they may be arrested. Full stop. Learned Attorney General undertakes on behalf of FIA that no journalist will be arrested to whom a notice under section 160 was issued by FIA. My lord. Yes. Salahuddin Ahmed, you can smile. It's been a long day, sir. Chale, on Tuesday, inshallah. Your Lordship, एक दरख्वास्त मेरी प्लीज सुन लीजिएगा. मुझे पता था आपने प्रेस नहीं करना है. नहीं, अभी आप इंस्ट्रक्शंस किससे ले रहे हैं? आप किससे इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं? Not to press. अच्छा, sorry, आपकी किताब. नहीं, I know that, but एवार ने तो हमारे सामने कोई withdrawal की petition नहीं फाइल की है दरखास्त. एक डाल दीजिए, next date को हम कर देंगे ऑर्डर उस पे. कल आपके खिलाफ कोई आ जाएगा कि जी उनको मैंने इजाजत दी थी विड्रॉ करने की, फिर आपको हम बचा रहे हैं. ठीक है, तो ट्यूसडे को आपकी जरूरत नहीं है अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं, unless Mr. Salahuddin Ahmed does not opposes your withdrawal of the petition. Do you oppose the withdrawal of the petition? Not at all. You just